Good morning, students. Today is the last unit of this chapter number 2, that is accounting process unit 6, rectification of errors. I hope you have completed your cash book theory plus problems and subsidiary books theory plus problems. I have shown you how to write all question answers within time. So टिकटिकी जी का टेक्निक अप्लाई करके कैसे सॉल्व करना ये आप सबको पता है. Before starting any sessions, yes, say good morning to in the comment section and your traditional accounts rules. Every one of you, Anaya Kumari is the first one who sent all these rules of accounts in comment section. तो अनया ने आज बहुत अच्छे से ये भेज दिया था ट्रेडिशनल अप्रोच. आफ्टर दैट बेटा किसने किसने भेजा है? मनी मेघलाई बेटा, वेरी गुड. वेंकट लक्ष्मी ने भेज दिया एंड आदिति साड़वी. बस देयर आर ओनली 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने ये भेजा हुआ है. एंड बेटा आदिति साड़वी, प्लीज मेक अ चेंज. डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर, ये रूल आपने लिखा नहीं है. सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये डेटर क्रेडिटर के बाद होता है. सो प्लीज चेंज योर आंसर. तो ये रूल लिखना जरूरी था. ड्यू रिलेशनशिप. सो personal account, so Aditi Sarvi, especially for you, personal account, due relationship, debit the debtor, credit the creditor, and receiving giving relationship, debit the receiver, credit the giver. Okay, real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal and real account are carried to balance sheet and nominal accounts are transferred to P&L. In case of modern approach, asset is equal to liability plus capital. Asset shows debit balance, liability credit balance, capital credit balance, and income minus expenses is equal to profit. So income credit balance, expenses debit balance, and profit is showing credit balance. So friends, in any session, I already explained you in any chapter, basics are very important. In last session, I promised you to take prepaid expenses ka one question. So today, yes, but because of time constraint, we couldn't solve that problem. But today I'm going to take that problem. So rectification of errors, now we are going to start. And after that, if time permits, I will take that question. So today's my target, especially today's target is rectification of errors. But mistakes. Everyone does mistake, not only in their life but also in accounting. So I'm not saying about beta ye life के mistakes मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ. We are talking about accounting mistakes. Okay, so accounting mistakes we are talking about. Okay, and that mistakes are beta errors in the life. Okay, so errors are called as unintentional mistakes. Unintentional mistakes are called as beta errors. And beta, what is fraud? Fraud means intentional mistakes. Okay, so you can find out here unintentional and intentional. So beta accounting mistakes. Here we will assume that mistakes which are unintentional are called as errors. So you can find out unintentional omission or commission. Now beta commission, you will ask me, sir, commission matlab wo jo broker se lete wo commission? No. Here commission means clerical errors. Clerical errors. Okay, clerical matlab calculations. Okay, clerical means computational, calculation mistakes are called as commission. Okay, so commission matlab kya? Commission means not any brokerage. Here commission means clerical errors or computational. कि हम लोग total लेते time we made a mistake while taking a total, we made a mistake. Okay, so ये in see when there were no softwares, so might be it happened that while taking a total 20 का plus 200, you are might be possible आपने जल्दी जल्दी में 400 लिख दिया, तो ये 0 कंसिडर ही नहीं किया था. सो 20 था but you consider it as 200. so 200 हो सकता है, or might be you have taken it as a 40, okay, instead of 220. so this is called as clerical error. So इसको क्या बोलते थे? Computational error. And this computational error, what happens? This computational errors are talking about not tallying your P&L and balance sheet. इसके वजह से क्या होता था? इसके वजह से P&L और balance sheet ये tally नहीं होता था. So
ये P&L और बैलेंस शीट टैली नहीं होना मीन्स व्हाट, ट्रायल बैलेंस डजंट गेट टैली, एंड ट्रायल बैलेंस डजंट गेट टैली मीन्स इट इज नॉट एग्रीड. ओके, सो नॉट एग्रीड मीन्स व्हाट, नॉट टैलिंग, एंड एग्री मीन्स व्हाट, टैलिंग. ओके, सो एग्री मतलब टैली होना, नॉट एग्रीड मतलब नॉट टैलिंग. तो टैली नहीं होता था, तो ट्रायल बैलेंस ड्यू टू सम मिस्टेक्स, एंड सम मिस्टेक्स आर देयर which not talks about that trial balance is going to tally, but yes beta, in the wrong way. For example, if Mahesh is debited instead of Suresh, तो सुरेश को डेबिट देना था, but you have debited Mahesh account. Whether your trial balance is going to tally? Yes, your trial balance is going to tally. But why it is going to tally beta? Because सुरेश ये क्या हुआ, सुरेश is a person जो नाम लिखना चाहिए था, पर हमने गलती से महेश का नाम लिखा, या महेश के बदले में सुरेश का नाम लिखा. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पेंसेटिंग एरर. दिस इज कॉल्ड एज compensating errors. So there are various types of errors. So in this batch, I'm not going to tell you directly types of errors. First, I will explain you one example. In example itself, I will tell you to find out the error ka type. Okay. So types of errors that we have to find out. Okay, types of errors. Okay, so do one thing. First prepare index. So index बना लीजिए. चलो चलो चलो, इंडेक्स बना लो फटाफट. फर्स्ट प्रिपेयर इंडेक्स. इंडेक्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बेटा 3 पेजेस, 3 पेजेस का इंडेक्स बनाइए. 3 पेजेस इंडेक्स. बेटा ट्यूसडे इज माय लास्ट सेशन. ओके, आफ्टर इंडेक्स write down accounting mistakes, divide it in 2 parts. One side write errors and second side write fraud. So draw the chart accounting mistakes. Draw this chart 100 pages notebook mein beta. Sorry. Index in 400 pages notebook. This you have to write it in the 100 pages notebook. Rectification of errors. In 100 pages notebook, first write down accounting mistakes, divide it in 2 parts. Divide it in 2 parts. Divide it in 2 parts, beta. Accounting mistakes, you have to divide it in 2 parts. One is errors and second one is fraud. 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए बेटा. नहीं बेटा, टेक्स्ट इज क्लियर बेटा, मेरे इसमें तो क्लियर है एकदम. टेक्स्ट क्लियर है एकदम. आई थिंक यू हैव नेटवर्क इशू बेटा आयुष बंसल. मैं वही चेक कर रहा था. ओके, yes, over accounting mistakes divided in the 2 parts. Then beta draw this chart.
ड्रॉ दिस चार्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चार्ट आप ड्रॉ कीजिए इन 100 पेजेस नोटबुक। Write down in 100 pages notebook. See, and while drawing chart, just hear me. Same year's book, without suspense account means before preparation of trial balance, and with suspense account after preparation of trial balance. After preparation of trial balance. So normally I will teach you the technique after preparation of trial balance, but there is one way before trial balance. Okay, and subsequent years book, beta, here nominal accounts will reflected by P&L adjustment account. Instead of nominal accounts, you will write P&L adjustment account. So this is the subsequent years book. So just write down this: nominal accounts replaced by P&L adjustment account. नॉमिनल अकाउंट्स किससे रिप्लेस होंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. Nominal accounts updated by P&L adjustment account. Write down over after drawing this chart. So same year and subsequent year. Without trial balance and with trial balance. And subsequent year, nominal accounts, P&L adjustment account. Write down over in the comment section after writing this in 100 pages notebook. यस बेटा पुरंजय ओवर. आज नए नए नाम आ रहे हैं. साधना सिंह तो मैं पहचानता हूँ, आयुषी बोथरा को मैं पहचानता हूँ. यस, बट मेनी न्यू स्टूडेंट्स टुडे. चलो बेटा, दिस इज अ सेपरेट चार्ट. एरर्स का नीचे का पार्ट था ये. एंड लास्ट टेबल राइट डाउन, बस इतना लिखे. डोंट राइट एग्जाम्पल्स. जो मैंने बॉक्स किया है वो लिखना. डोंट राइट दिस. ओनली यू टू राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स. एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर इन अकाउंटिंग प्रोसीजर, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन, एंड एरर ऑफ कमीशन. अच्छा ये लिख लेना, ये लिखना. कंप्लीट एंड पार्शियल, ये लिखना. Error of omission is divided again in complete omission and partial omission, then error of commission, and then compensating errors. So what you have to write? Error of principle, error in procedure, error of omission, and error of commission, and clerical errors. Error in procedure, don't beta account in procedure. Okay, and last one, clerical errors. And clerical errors divided in 3 parts: error of commission, error of omission, and compensating errors. So first one is error of principle, second one is error of accounts in procedures, and third one clerical errors. इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे. प्रोसीजर मींस जर्नल से डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस पे शिफ्ट हो गए या लिखा ही नहीं, ऐसा भी बोल सकते हो, या प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करना. So clerical errors and principal errors mainly questions are related to.
Divide it in 3 parts: error of clerical errors, error of omission. But after writing classification of errors, Anil Kumawatji is saying, sir, I am attending your first time classes. So I don't know exactly what is 100 pages and 400 pages notebook. But 100 pages ki notebook is your last day revision notes, theory book. And 400 pages is your solving book. So we have to maintain 3 notebooks actually. And third book, timing book. तो 3 notebooks आपको maintain करने हैं. अभी आप मेरे स्टार्टिंग से सेशन देखोगे तो यू विल एंजॉय मोर. तो आप प्लीज कृपा करके स्टार्टिंग से मेरे सेशंस को देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को. तो आपका सेशन आप बैठिए, आज समझ लीजिए पूरा सेशन. बट 2 नोटबुक्स आपको मेंटेन करनी है, एक 100 पेजेस, एक 400 पेजेस. बेटा सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी विल गिव यू रिजल्ट. जो बच्चे ये मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे, जो आज की सोच नहीं रख रहे, जो 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद वो सोच रखने वाले, वही ये सीए होने वाले हैं. सो नोटबुक मेंटेन करना बहुत जरूरी है. Just write classification of errors completed. Yes. Very good, पुरंजय. पुरंजय बोल रहे सर मैं पहले दिन से आपके लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूँ. वेरी गुड. कितने बच्चे फर्स्ट डे से मुझे फॉलो कर रहे हैं? प्रॉपरली जिन्होंने नोटबुक रखा हुआ है कितने बच्चे बेटा? वेरी गुड. प्रसन्नता, आदिश्री, प्रियंका, गुरफान, अंशिका, आयुष. आयुष को पहचान दो, मैं साधना को पहचान दो. पहचान दो मतलब बार बार कमेंट्स करते रहते हैं. रितु को पहचानता हूं मैं. रिया सिंह, अंश वर्मा, आयशमा, पंजाब आसिफ. बेटा बेटा बताता हूँ बेटा, पंजाबी आसिफ. यस, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल योर डाउट्स, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. यश चांडक, पूर्वा जोशी. अरे बाप रे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. आयशा, वेरी गुड बेटा. गौरव, श्रिया, अंश, हिमांशु, आर्ची, सर्वेश, फरीन, अंशिका. लास्ट डे रिवीजन नोट्स प्रॉपरली मेंटेन कर रही है. वेरी गुड बेटा. सूर्या, श्रीकांथन, कार्तिक. फर्स्ट टाइम वॉचिंग. कार्तिक इज सिंह सर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. यस बेटा, वेरी गुड. ओके, चलिए. वेरी गुड आदित्य. सी, whenever you are solving for the first time, why I am taking this session today, this is just motivational session. Remember, if you follow my instructions properly, don't think of today. Today you might find this difficult. Okay, so sir, while solving cash book, I am taking 20 to 30 minutes. But this is a CA course. And you are going to take time for first time. Okay, don't worry. So if you are solving it for first time, definitely you are going to take time. So 20 minutes, 30 minutes. But beta, once you understood the concept in CA course, and when you are revising, then
you will find it more easy. And these are some techniques which I'm giving you by from my last 12 to 13 years experience. If you follow in 2015, in 2016, if you see the question paper, questions are really easy. These questions were really easy. But if you see 2020 ka question paper, as generation changes, better questions also changes. Difficulty level is going to rise. In Pune, when I was doing CA course at foundation level, that time it was PE1. Okay, so PE1 था हमारे time पे, and only 2 colleges or 3 colleges were there for our examination centers. So how many students? Hardly 1,500 students. They appeared for CA foundation course. Now in Pune, we have minimum 15 to 20 beta centers, examination centers. Means almost from Pune itself, more than 8,000 students, they are appearing now. So this is a huge difference between beta in 20 years. I appeared my foundation exam in 2002. I remember. And 2002 or 2003 exactly, 3 tha shayad se. So 2022, so it's almost 20 years back. Only 3 centers. So difficulty level is going to increase. At my time, there were only 2 classes in Pune. Now there are minimum 30 classes in Pune. So see the difference. Okay. और मैं आईसीआई के साथ क्यों जुड़ा हुआ हूं बेटा, एक बोल सकता हूं, एक पहले से ही आईसीआई के साथ कनेक्शन था और मुझे यही से आगे कंटिन्यू करना था. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इतना ही बता रहा हूं कि आप लोग यदि रिविजन्स करना चाहते हो, इफ यू वांट टू रिवाइज इट प्रॉपरली, मेंटेन योर notebooks not only for my subject but for all subjects, and always think for the future. आज today I will understand sir rectification of errors, I understood, but beta while revision कुछ भी याद नहीं आने वाला है. And revisions you have to do by your own, and it is human tendency. आपको मैंने कल क्या खाया था ये याद रहेगा, पर 15 दिन पहले क्या खाया था ये किसी को याद नहीं आने वाला है. सो ये टिप्स मैं जो दे रहा हूं ना आपको, ये आज की टिप्स नहीं है, ये मैं 3-4 महीने के बाद वाली टिप्स दे रहा हूं. और आप उसमें और क्या करते हो फिर प्राइवेट क्लासेस में क्या होता है कि नॉर्मली आई एम टेलिंग यू, नॉट ऑल, बट व्हाट हैपेंस नॉर्मली कि एवरीथिंग इज स्पून फीडिंग, और स्पून फीडिंग इज वेरी डेंजरस इन सीए कोर्स. जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा. सब रेडी है सर, पर मैं कब पढ़ूंगा, मैंने फुल आंसर्स भी दे दिए आपको, रेडीमेड आंसर्स, बट बेटा व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इट इन नोटबुक तब तेरी मेहनत ज्यादा है. तो ये समझ लो. नॉट ओनली फॉर माय सब्जेक्ट, लॉ में डेली एक टिप दे रहा हूं, डेली राइट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, डेली 3 क्वेश्चंस and answers in your own words. So that is a law technique. Daily 3 question answers. Mathematics notebook, formula book, prepare it separately. Formula book. BCR, daily 1 कॉन्वर्सेशन स्किल करना है आपको, या कुछ न्यूज़पेपर का एक आध राइटिंग आर्टिकल या एनी लेटर, प्लीज आपके लैंग्वेज में लिखो, डोंट वरी. BCK eco, solve maximum MCQs, daily 20 to 30 MCQs for BCK and economics. So this technique will help you out, not today, daily 20, only 20 MCQ, and Sunday revisions, mandatory. Sunday is a revision day. Revisions are compulsory. If you don't revise it within a day, 1 day in a week, it will be difficult. My ranker students, they used to revise on daily basis. 7 days के पहले का वो आज रिवाइज करेंगे सोने के पहले. Revisions are mandatory in CA course. Okay, and then you will be out of 100, आप 45 students में कहलाओगे, because foundation result is 30 to 35, 45 तक. So 30 to 35 students
normally they pass in foundation. But out of that, if you do not have the same technique at inter level, only 20 students are going to pass. And in CA final, out of this 20, only 2 students in first exam. So see the ratio of first exam. Out of 100 students, only 2 students who are very sincere in their work. I have seen the many students who are merit rankers in Pune, 11, 12 standard ke merit rankers. I remember one of my friend, he was topper of my college, but he took 7 attempts to clear intermediate and 7, 8 attempts to clear CA final. Almost at the age of 29, he cleared and he was topper of my college. He got 50 out of 50 in mathematics in foundation, but still no sincerity, and therefore he took 8 to 9 attempts to clear his intermediate and final. So it's request to all of you, be punctual, be sensible, और रिविजन्स जो है वो मैक्सिमम कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन दिस कोर्स, नथिंग एल्स. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. बेटा, यू हैव रिटन दीज एरर्स. सस्पेंस अकाउंट. नाउ वी विल टेक मूव टू प्रॉब्लम पार्ट. सो प्रॉब्लम पार्ट्स के ऊपर हम लोग मूव होते हैं अभी. जल्दी से आ जाइए. So I will tell you these things in the problem itself, which error is exactly. So remember only these names: error of principle, clerical errors. Clerical errors, you have to divide it in 3 parts: error of omission, error of commission, and compensating. Now I will take some problems. In problem itself, I will tell you, beta, which type of error. ठीक है? तो come to illustration number 1. Illustration number 1 of study material. चलो जल्दी से लीजिए एरर्स. In error itself, I will tell you exactly which type of error. Okay. How would you rectify the following errors in the books of Ram and Company? So beta, 400 pages notebook. 400 pages के notebook में आ जाइए. Write down illustration 1. Sir, is this next lecture also give notes like you? Because this is very helpful. Beta Pramod, I really don't know. Accounting is an art. So teaching is also an art. So beta, every faculty has its own thinking. So I don't know whether he will tell you to write it in 100 pages or 400 pages. So follow his technique. Otherwise, try to follow my technique and his information. Okay. So mixture कर देना. Okay. चलिए. चलो. 100 पेजेस के नोटबुक में मत लिखो, 400 पेजेस नोटबुक. The total to purchase book has been undercast by ₹100. The total of purchase book undercast by ₹100. See, now tell me, remember subsidiary books? Okay. So purchase book से account जाएगा in purchase account. Purchase book की account की total after certain interval, normally month end pay, we take it in purchase account. Remember? And creditors account updated immediately. Sir, Ajay Enterprises problem. Ajay Enterprises. Okay. So purchase book की total जाएगी purchase account में. And creditors account immediately we transfer. Okay. Creditors account immediately we post it in the creditors account. Sir, now purchase book is showing 100 rupees balance and creditors account is showing 120 balance. So while taking total, it is short by ₹20. So creditors is correct. Creditors you posted correctly.
but there is a 20 ka difference. Okay, 20 rupees difference in purchase book. Sir, purchases shows, now this is a master chart. Purchase account 100 पेजेस की नोटबुक साइड में ही रखना. Purchase account, sales account, purchase return account, which is also called as beta return outward, and first understand this, sales return. What is sales return beta? Sales return is return inward. 100 pages की notebook side by side, simultaneously write it in the 100 pages notebook. This is account name. Balance, short oblique undercast, short oblique undercast, and last one excess oblique overcast. Overcast मतलब excess दिखाना. So account name, purchase account. Yes beta, purchase account is showing debit balance. Sales account is showing credit balance. Purchase return account is showing beta opposite of purchase, means credit balance, and sales return is opposite of sales account, has a debit balance. Beta short means same side. So in rectification, you will give same effect, and excess you have shown, so excess you have to reduce, so opposite effect. So if short होगा तो same balance देना है, and excess होगा तो opposite balance. Excess means opposite balance, you have to give it in the rectification entry. So beta short होगा तो debit, credit, debit, same balance. But if excess तो बेटा excess होगा तो credit. इन रेक्टिफिकेशन, बेटा इन रेक्टिफिकेशन क्रेडिट एंट्री सेल्स को डेबिट देंगे, परचेस रिटर्न को डेबिट देंगे, एंड सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करेंगे. ओके, इन अपोजिट साइड. चलो राइट डाउन दिस मास्टर चार्ट. सो अंडरकास्ट ऑब्लिक ओवरकास्ट. Account name, balance, short, excess. Understood the chart beta? विकी कुमार, अकाउंट्स में सभी लोग स्ट्रांग ही है अपने स्टूडेंट्स. सो निगेटिविटी मत रहने दो, मन में निगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए कि मैं अकाउंट में स्ट्रांग नहीं. भाई सब स्ट्रांग है अकाउंट में, क्या है अकाउंट्स में अप्लाई करने रूल्स, है ही क्या डिफिकल्ट. अकाउंट्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट बेटा. यस बेटा, पंजाबी आसिफ जी, आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ ओमिशन, डोंट वरी. आर्यन कुमार सर, 2003 तो मेरा बर्थडे था. यस बेटा, अभी मैं भी एज से तो ऐसे बड़ा होते जा रहा हूं, डोंट वरी. अंडरकास्ट मतलब कम दिखाना. आयुषी, अंडरकास्ट का मीनिंग होता है शॉर्ट. अंडरकास्ट मीन्स बेटा हमारी बैलेंस टोटल में कम दिखाया. शॉर्ट क्या हमारी टोटल 120 थी पर 100 रुपया हो गई. ओके, ओवर, अरे ओवर क्या, 100 पेजेस नोटबुक में लिखना था. यस, अंडरकास्ट मीन्स कम दिखाया, ओवरकास्ट मीन्स ज्यादा दिखाया. अंडरकास्ट मीन्स यू हैव शोन लेस, नाउ यू विल शो मोर. सो बड़ा एडलेस करना है. चलो 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 फास्ट, बड़ा बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आज. अंडरकास्ट, ओवरकास्ट. कार्तिक, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस यू आर फाइंडिंग इट्स डिफिकल्ट. अरे बेटा पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, क्या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी कम रहेगी ना उस टाइम पे पढ़ा करो. आज मुझे बेटा 2 फैमिली का केयर लेना पड़ता है. 2 फैमिली, एक मेरी घर की बेटा खुद की,
और मेरे वाइफ के मम्मी पापा, वो भी एक फैमिली है ना, दो फैमिली, इसलिए तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या, फिर पढ़ो उसके इसमें। ऐसा डिफिकल्टी वर्ड मत रखो आपके डिक्शनरी में। चलिए, ओवर। सो सर, नाउ टोटल ऑफ परचेज डे बुक was undercast by rupees 100. Sir, means creditors को correctly creditors you recorded correctly, but purchases account is short by rupees 100. Oh, so now what is rectification entry? See, I will tell you exactly. Purchases, assume purchases debit, assume purchases is debited by 150 and creditors total is 250. So beta, purchase you recorded, creditors correct hai. But purchases correct entry is purchases account debit 250 to creditors account 250. This is only example I am giving you. So what is correctly recorded, beta? You recorded creditors and creditors correctly. But purchase account, you recorded only 150 instead of 250, and therefore suspense account, your account is not getting tallied, so suspense account is rupees 100. Sir, trial balance में open किया था ना suspense account, you remember trial balance में हमने suspense account open किया था. So suspense account is when you open when your debit and credit are not tallying. Sir, so in rectification, I have to increase this balance from 150 to 250. So, sir, for increase in balance, I will give same side. So, purchase account debit 100 and suspense I am going to cancel. So suspense is rupees 100. Remember, wrong entry plus rectification entry is equal to correct entry. So correct entry is equal to wrong entry plus rectification entry. Now creditors, there is creditors 250. Purchase 150 plus 100, 250. And suspense debit, credit is getting cancelled. So beta, there is no suspense account in correct entry. ओके, सो रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू करेक्ट एंट्री. ये सबसे आसान तरीका है. वापस से एक बार हिंदी में दोहराता हूं. करेक्ट एंट्री में था बेटा परचेस अकाउंट 250 टू क्रेडिटर्स अकाउंट 250. अभी हुआ क्या, हुआ ये कि रॉन्ग एंट्री में आपने परचेस को डेबिट दिया सिर्फ 150 रुपीज. सर 100 रुपीज से कम दिया, अंडरकास्ट. सर अंडरकास्ट मतलब कम दिखा ना, तो परचेसेस को मैंने 150 को लिखा एंड क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स बराबर लिखा, क्रेडिटर्स 250. सर फिर क्या हुआ, सर 150 का डेबिट है, 250 का क्रेडिट है, मतलब सस्पेंस आया सर, सस्पेंस को डेबिट आया 100 रुपीज का. ओके, अभी सर मेरा काम है रेक्टिफिकेशन करना. एज अ चार्टर अकाउंटेंट मुझे रेक्टिफिकेशन करना है. तो परचेस को मैंने 250 को डेबिट देना चाहिए था. सर 150 को डेबिट दिया, तो 100 रुपए से और डेबिट देता हूं. सर परचेसेस को सेम इफेक्ट दिया 100 रुपीज. एंड सस्पेंस अकाउंट मैंने लिख दिया बेटा, सस्पेंस अकाउंट को मैंने लिख दिया टू सस्पेंस 100 रुपीज. सस्पेंस को मैंने कैंसिल किया, सस्पेंस को मैंने कैंसिल किया. तो सस्पेंस अकाउंट आई कैंसल इट बाय रुपीज 100. सो बहुत बढ़िया समझ में आया. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? So what is the equation? Correct entry is equal to, sir बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले, don't worry, we are going to solve many questions. So correct entry is equal to, first time you may find it difficult, correct entry is equal to wrong entry plus rectification entry. सर 250 मैंने इमेजिनरी लिया रितु, 250 मैंने ऐसे ही लिया इमेजिनेशन. 250 कहां से लिया रितु का क्वेश्चन है. सर 250 मैंने इमेजिनरी लिया है. सर रितु अंडरस्टूड बेटा. रितु और कोई क्वेश्चन है तो अब भी पूछ लो. Purchase to suspense 100. ओके, चलिए.
So now first entry over. Yes, write down beta. Answer write down. So do one thing. Do three columns. Do three columns beta. Correct entry, wrong entry and rectification entry. Format draw कीजिए. Case 1 trial balance is prepared. Case 1 trial balance is prepared. Case 1 trial balance is prepared. Trial balance is prepared. So write down. Case 1 trial balance is prepared. Serial number, that is transaction number. Correct entry, wrong entry, divide it in three parts. Rectification entry. Correct entry, wrong entry, rectification entry. Draw properly. So in rectification entry, short. Short means purchase account debit directly in rectification. Purchase account debit to suspense account. 100. Transaction 1 completed. Draw one line. Draw one line beta. Okay. Second one. Second one. Over 400 pages notebook है बेटा. 400 pages notebook. Second one. Return inward book has been undercast. Return inward. Return inward means beta sales return. हाँ, undercast means beta same effect or opposite. चलो, tell me. Sales return, same side or opposite side. Undercast means yes beta in rectification entry are you going to give same side balance or opposite side balance? चलो जल्दी से बताओ comment section में. फटाफट बताइए in comment section. Same balance or opposite balance? चलो 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 fast. Same balance or opposite balance? Very good. Who wrote fast? Yes. सबसे पहले साधना ने बताया. वेरी गुड बेटा साधना. कहां से बेटा साधना तू? सीआरओ दिल्ली है क्या बेटा साधना? और पंजाब से किधर? सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड बुक अंडरकास्ट बाय ₹50. सो अंडरकास्ट मीन्स बेटा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. अंडरकास्ट मीन्स सेम साइड. अंडरकास्ट मतलब सेम साइड पे रेक्टिफिकेशन होगा. नाउ सेल्स रिटर्न हैज डेबिट बैलेंस. सेल्स क्रेडिट, sales return debit. So our entry will be very simple. What is the entry? Sales return account debit. Sales return account debit to suspense account. 50. Okay. Undercast is same side. Yes, very good. अच्छा. कहाँ से हमारे यहाँ पे बच्चे जुड़े हुए देखो. बिहार से है साधना जी. वेरी गुड बेटा. प्राउड ऑफ यू. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. थैंक्स टू आईसीआई कि कहाँ के बच्चों से हम लोग जुड़ गए.
वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड बेटा. चलो, नाउ लेट्स मूव टू थर्ड एंट्री. अ सम ऑफ रुपीज 250 रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ मीन्स बेटा पी एंड एल को डेबिट देना, पी एंड एल में डालना. रिटर्न ऑफ मीन्स पी एंड एल में डालना, नॉट ओनली डेबिट, इट माइट बी क्रेडिट. नाउ यू हैव टू चेक द आइटम. इफ एसेट आइटम देन बेटा पी एंड एल को डेबिट देना है, इट इज ट्रांसफर टू पी एंड एल. रिटर्न ऑफ मीन्स ट्रांसफर टू पी एंड एल. So you can write over there. Written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account. See the logic. Okay, sir, for rectification your journal entries must be very strong. Journal entry strong होना बहुत जरूरी है. Journal entries are first lecture. Identify two accounts. Sir, what are two accounts? Depreciation is a nominal account. So we have chapter on this depreciation. So that faculty will definitely tell you entries for depreciation. So entry में ही बता देता हूँ. How to calculate depreciation? We have separate chapter. Here amount is given in the question. Okay. So basics होना बहुत जरूरी है. Depreciation and दूसरा account is machinery. So there are two accounts. One is depreciation, which is a nominal account, and machinery is a real account. So, but depreciation is my loss, and machinery is getting reduced due to depreciation. What is depreciation? Depreciation means reduction in the value of asset. Reduction in the value of asset is called as depreciation. Okay, so depreciation जो है, okay. Depreciation account debit to machinery account. So what is the entry? Write down entry. See, correct entry is depreciation account debit. First understand, then write. Please, please, please wait for some time. Depreciation account debit. Understand first technique. Please, please, please understand the technique. 250 to machinery account 250. Now depreciation account debit to machinery is a correct entry. But what happened? You have not debited to depreciation. Oh, so depreciation ko not debited means machinery is credited. Machinery mein there is no mistake. So machinery credited to machinery 250. Sir, which account is debited then? But a suspense account is debited. Trial balance is prepared means suspense account is debited. Suspense account is debited. Depreciation is not debited. So suspense is only debited. कुछ भी नहीं डेबिट दिया, मतलब सस्पेंस को डेबिट देना है. ओके, 250. सर, नाउ व्हाट इज द टेक्निक? फर्स्ट सी व्हाट इज करेक्ट. करेक्ट मशीनरी, करेक्ट मशीनरी, करेक्ट. सो देयर इज नो स्कोप ऑफ मशीनरी इन रेक्टिफिकेशन एंट्री. तो रेक्टिफिकेशन में मशीनरी नहीं आएगा. मशीनरी करेक्ट पोस्ट किया ना, तो रेक्टिफिकेशन में क्यों आएगा? यस सर, अंडरस्टूड. नाउ same balance, correct entry, which is uncommon. So what is the technique? Technique is very easy. So first find out technique में first common in correct entry and wrong entry. Okay, common होगा तो no scope in rectification, not in rectification entry. So which is common one has not in rectification entry. Okay, so first find out common. सो रेक्टिफिकेशन में नहीं आएगा. हाँ, देन जो नॉट कॉमन है, नॉट कॉमन मीन्स कौन कौन? डेप्रिसिएशन एंड सस्पेंस. करेक्ट एंट्री को सेम साइड इन रेक्टिफिकेशन एंट्री. सो दिस इज द रूल. एंड विच इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग एंट्री में जो है अपोजिट साइड इन रेक्टिफिकेशन एंट्री. सो रूल इज वेरी इजी. व्हाट इज द रूल? You can write this rule in 100 pages notebook. How to pass rectification entry. How to pass rule for rectification entry. Rule for rectification entry. So what is Sanket sir's rule? First common. Find out common in correct entry and wrong entry. CE correct entry and wrong entry. So that will be not in the rectification entry. अरे वो correct है ना? Correct है तो काय को ये करना है. और जो नहीं common है, जो नहीं कॉमन है, जो करेक्ट एंट्री में है,
उसको सेम साइड देना है, और रॉन्ग एंट्री में जो है उसको अपोजिट इफेक्ट देना है। सब पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ, पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। जो कॉमन है पहले कॉमन कॉमन को आइडेंटिफाई करो, जो दोनों कॉमन है तो रेक्टिफिकेशन में नहीं आएगा। और जो अनकॉमन है, अनकॉमन में जो करेक्ट एंट्री में उसको सेम इफेक्ट देंगे, और जो रॉन्ग एंट्री में उसको अपोजिट इफेक्ट देंगे। सर ज्ञान हुआ क्या प्राप्त? पूरा ध्यान में आया? हाउ टू पास द एंट्री? ओके। तमन्ना देख बेटा, 2 मिनट। तमन्ना देख बेटा, एंट्री क्या थी, ध्यान देके सुन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी की एंट्री करनी थी। सर डेप्रिसिएशन इज लॉस है अपना, एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होगी। एसेट रिड्यूस होगी तो बेटा एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट करेंगे, एसेट गोज आउट होगा। एंड डेप्रिसिएशन ये अपना लॉस है तो उसको डेबिट होगा। एंट्री समझ में आया? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, वेरी सिंपल एंट्री डेप्रिसिएशन की। अभी हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी की एंट्री करनी थी, पर हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट ही नहीं दिया। तो डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं दिया तो किसको डेबिट दिया? सस्पेंस को डेबिट दिया। किसको डेबिट दिया? सस्पेंस को डेबिट दिया। एंड मशीनरी को क्रेडिट किया, मशीनरी करेक्ट किया। अच्छा सर, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री दोनों भी समझ में आए? करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री दोनों भी समझ में आए। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, सस्पेंस टू मशीनरी। फिर सर ने क्या किया, कॉमन कॉमन को उठाया। पहले कॉमन कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन है मशीनरी, मशीनरी तो इस पे कोई गलती नहीं है। मशीनरी करेक्ट पोस्ट किया ना, तो रेक्टिफिकेशन में आने का सवाल ही नहीं है। अभी जो कलर नहीं किया मैंने, जो कलर नहीं किया वो कौन है? डेप्रिसिएशन एंड सस्पेंस। तो डेप्रिसिएशन जो करेक्ट एंट्री में है उसको डेबिट देंगे, करेक्ट एंट्री में जो है उसको सेम इफेक्ट अनकॉमन में, एंड जो अनकॉमन है रॉन्ग एंट्री में उसको अपोजिट इफेक्ट देंगे। सर एंट्री होगा डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस। पूरा क्लियर हुआ सर, पूरा क्लियर हुआ। यस, डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस, ये रेक्टिफिकेशन का रूल है। रेक्टिफिकेशन का रूल क्या है? पहले फाइंड आउट कॉमन कॉमन, और जो अनकॉमन है उसमें करेक्ट एंट्री को सेम इफेक्ट एंड रॉन्ग एंट्री को अपोजिट इफेक्ट। खत्म, खत्म सर, खत्म। कुछ नहीं होता बेटा पीयूष। वेरी गुड बेटा। रितु तो साइंस वाली है अपनी। अरे रितु बता सकती तो कोई भी बता सकता है इंडिया में। रितु तो साइंस बैकग्राउंड की अपनी, फिर भी बता रही इतना। अकाउंट्स बहुत अच्छे से आने लगा रितु को। वेरी गुड बेटा। चलो, नाउ सी दिस ट्रांजैक्शन। अ पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। सैलरी पे किया मोहन को। सर एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट। सर अमाउंट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। डोंट टेल मी सर 75 का भी सैलरी होता है क्या? अरे इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। 75 टू कैश 75, salary to cash 75. But what happened? Salary posted twice means salary account debit 150 to cash 75 to suspense। तो सैलरी को डेबिट दिया 150, सर कैश करेक्ट किया ना, कैश करेक्टली रिकॉर्डेड 75 टू सस्पेंस। नाउ सर व्हाट हैपेंड? सो फर्स्ट फाइंड आउट कॉमन कॉमन, कॉमन कॉमन, कैश कैश, कैश कॉमन, कैश कॉमन। ओके, नाउ सर व्हाट टू डू? सर सैलरी को कितना डेबिट देना था? 75। यू डेबिटेड 150। सर सैलरी ज्यादा बताया 150, सो आई हैव टू रिवर्स। सो आई विल रिवर्स सैलरी बाय 75। रेक्टिफिकेशन में आई हैव शोन मोर, सो आई वांट टू रिवर्स दैट सैलरी।
How to reverse? By giving opposite effect. By giving opposite effect. So how to reverse the entry? By giving opposite effect. And suspense has to be reversed. So debit. Sir, rectification entry is very easy. Suspense account debit to salary. 75, 75. Are you finding it's easy now? Are you finding it's easy? Okay. So salary. Yes, beta. Salary, cash to suspense. Cash common. So reverse the entry. Salary by 75 and suspense by 75. Sir, very easy, sir. Very easy. इतना easy कुछ है ही नहीं. सर रेक्टिफिकेशन में मास्टरी लाना है अपने को. ये रेक्टिफिकेशन ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. हाँ बेटा अंशिका, don't do rectification entry directly. First write correct entry, then write wrong entry, then rectification entry. कुछ स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी होती है डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन. नो बेटा, फर्स्ट फाइंड आउट ना करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री. ओके, वेरी गुड आयशा, वेरी गुड. सैलरी विल बी रिवर्स. रितु तिवारी, क्यों रिवर्स करना है बेटा? सैलरी को 75 डेबिट दिया था, देना चाहिए, पर तू कितने से डेबिट दिया? 150 से डेबिट दिया. तो 150 डेबिट सर 150 मतलब 75 से ज्यादा डेबिट दिया, तो बेटा सैलरी को रिवर्स करना पड़ेगा. रितु, सैलरी को 75 से रिवर्स करना पड़ेगा. कम करना है ना सैलरी. अरे सर 75 डेबिट देना था, पर 150 डेबिट दे दिया. 75 से कम करना है. अभी कम करना है तो कैसे करने का? अपोजिट इफेक्ट. अकाउंट्स का रूल क्या है? माइनस नहीं करने का. इधर कैसे माइनस करेंगे? अपोजिट इफेक्ट देके माइनस करेंगे. ओके, सो कभी भी कम करना रहेगा अकाउंट को तो अपोजिट इफेक्ट देना है. रितु क्लियर बेटा? क्लियर. रितु थोड़ा सा इजी नहीं लगेगा, रिवीजन के बाद और इजी लगेगा. सर रेक्टिफिकेशन में तो कैश नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना बेटा, रेक्टिफिकेशन में कैश नहीं आएगा. कैश हमने ऑलरेडी करेक्ट रिकॉर्ड किया है. सो रेक्टिफिकेशन में कैश नहीं आएगा. वेरी गुड महक. यस, यस बेटा प्रियंका, यू कैन राइट दिस एंट्रीज इन एग्जाम. चलो 5 नंबर पे, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 has been posted to the credit of bills receivable account. Oh, sir, bills receivable topic we have separate chapter. सर रिसीवेबल, सर का लॉजिक पता है. सर बिल्स रिसीवेबल एसेट है. एनीथिंग विच इज रिसीवेबल एसेट. सर एसेट को कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट. बट यू पोस्टेड इट टू क्रेडिट. ओ माय गॉड, क्रेडिट में पोस्ट कर दिया. अभी सर फर्स्ट आई हैव टू कैंसल दिस क्रेडिट and then again debit. So 2 times I have to post. One, I want to cancel that credit and I want debit. Bills receivable debit. So beta, you have to do this posting 2 times. One of cancellation. So what is the entry? Directly in rectification. Bills receivable account debit. Bills receivable account debit to suspense. Direct rectification entry beta. Like purchase book undercast. Bills receivable debit to suspense. Sir, 1500 plus 1500, 3000. Sir, why 3000? One is cancellation, opposite effect of credit, debit. And one I want debit. Okay. So cancellation of credit 1 time and again debit 1 time. So amount is 3000. So मुझे बिल्स रिसीवेबल को मैंने गलती से क्या कर दिया? चलो हिंदी में समझ लो. बिल्स रिसीवेबल को गलती से मैंने क्रेडिट कर दिया. देना क्या चाहिए था? डेबिट. सर पहले क्रेडिट को कैंसिल करना पड़ेगा. ओके, और सर मुझे डेबिट चाहिए. सो 2 बार डेबिट होगा, एक कैंसिलेशन का और एक बार डेबिट का. तो 2 बार कितना हुआ? 3000 3000. सर नाउ आई अंडरस्टूड. इट्स वेरी इजी. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. सर इजी 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 इजी. यस सर, वेरी इजी. यस बेटा आदिति, दिस इज एग्जाम वे. चलो और कोई क्वेश्चन या सवाल या शक? चलो लिखो जल्दी से आंसर्स. यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड. रितु को समझा तो पूरे इंडिया को समझा. रितु कहां से बोली तू? बिल्स रिसीवेबल टू सस्पेंस. हाँ सर, वेरी इजी सर, वेरी इजी.
अच्छा, यहाँ पे करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री क्यों नहीं किया? बिकॉज इट्स अ पोस्टिंग एंट्री रॉन्ग. सो बेटा हियर you can do correct entry wrong entry, but I have to take then imaginary figures लेने पड़ेंगे. Okay, that's why I'm not done. In the remaining problems कैसा है? When there is a problem of posting undercast, overcast, या taking total is wrong, तो बेटा directly you can post it in the rectification entry. Good question बेटा. Aisha. Yes, good question बेटा. Aisha. Why we have not debited or credited directly in correct entry wrong entry? Because this is a posting problem. And whenever it is a posting problem, beta, only one account, you can directly take it in the rectification entry. Okay. Otherwise, I have to assume some figures. Yes, beta. Exam mein same thing you have to write. Yes, beta. Ritu Tiwari is from Ramnagri, Ayodhya. Yes, beta. Very good. Yes. Yes. Very good, beta. Archie Dubey. आर्ची दुबे कहां से बेटा तू? CRO. बेटा आर्यन लिखा तो अच्छी बात है, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री. इट इज इजी टू आइडेंटिफाई. Directly you cannot do it in the rectification entry, so it is very easy if you write correct entry wrong entry and then rectification entry. Chalo next one. हाँ चलो see amount 151 to credit sale to Hari, although credit entry correctly entered in sales book but posted to his account as 115. Okay sir, so what is sales entry? Chalo sales entry. Hari account debit to sales. What is the correct entry? Hari account debit to sales account. 151. But what happened? Hari account mein we have written it as 115. What we have written? 115. And sales account ko credit by 151. Sales account ko credit by 151. So, beta, suspense is debited. Now, balancing figure, suspense account debit 151 minus 115, 36. Now, in rectification entry, what is correct, beta? What is correct? Correct, shuche. Sales, correct. Sales, correct. So, there is no scope of sales in rectification entry. Okay, rectification entry में sales नहीं आएगा. Okay, now Hari account is debited by 151 and here 115. So मुझे Hari को बढ़ाना है. Hari I want to increase. Wrong entry. कितने से हुआ है बेटा? 36 rupees. बराबर है ना? 36. हाँ. So 36 से Hari account बढ़ाना है. Hari account increase by 36 and suspense I want to cancel. So to suspense 36. So this is the rectification entry. Hari to sales. Hari account debit, suspense account debit to sales. Hari to suspense 36. Easy, Jay? Easy? Very good. Very good. आर्ची दुबे इंदौर से है ऐसा लिख रही है. वेरी गुड. Hurry to suspense. Beta, this unit, if you found correct entry and wrong entry, this chapter is very easy. But what normally students making mistake, they cannot identify correct entry, and that's why they are finding the chapter very difficult. Okay, पहले तो correct नहीं समझ में आता, उसमें wrong का तो सवाल ही नहीं है.
तो रेक्टिफिकेशन तक कब पहुंचेंगे सर? तो बच्चे ऑप्शन में रख देते हैं इतना मस्त चैप्टर होके। संकेत सर स्टूडेंट्स नहीं, कभी नहीं ऑप्शन में रखेंगे। दे अंडरस्टूड इट। हरी टू सस्पेंस, हरी टू सस्पेंस। मार्क रॉय बोल रहा है पूरा समझ में आया। आदिश्री बोल रही है नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। बेटा हैव पेशेंस, यू विल अंडरस्टैंड इट। मनीष जैन इजी है। अरुण क्लियर सर। आदिश्री यस बेटा वी शुड राइट दिस इन लाइक इन एग्जाम। यस बेटा। रितु तिवारी इजी है। यस। साधना ट्रिकी तो सब कुछ है बेटा, प्रैक्टिस के बिना क्या होने वाला है। चलो 6 नंबर की एंट्री देखते हैं, लास्ट वन। हाँ, अभी फ्रॉम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आई विल गिव यू टाइम टू थिंक correct entry, wrong entry, and then rectification entry. So from next illustration, not now. First illustration, I totally explained you in the proper way. Today and tomorrow, it's your practice day. So Sunday ना बेटा, Sunday को practice करनी है इलू 1 से लेके last illustration तक, okay? और next session में मैं और extra practice लूंगा। Discount allowed to Satish has not been entered in discount column. So what is the entry? So discount allowed. So discount allowed is a loss and Satish is a cancelled. So Satish पहले debtor था, debtor now cancelled. So what is the entry? Correct entry is discount allowed account debit. Discount allowed to Satish. Discount allowed to Satish. Amount कितली है? 25, 25, 25. Amount is 25. But what happened? Sir, not entered in discount column, sir. Okay. सर सतीश को करेक्टली पोस्टेड किया, सतीश को क्रेडिट किया टू सतीश 25, बट नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड। सर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, सर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। हाउ मच? 25. सर नाउ व्हाट इज करेक्ट? सतीश 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 सतीश, करेक्ट। सो नो इन, नॉट इन रेक्टिफिकेशन। सर डिस्काउंट अलाउड अनकॉमन, same effect. Suspense account in wrong entry, opposite effect. So correct entry, rectification entry, discount allowed account debit, discount allowed account debit to to suspense, discount allowed to suspense 25, 25. Okay, sir, everything over sir? 6 और 7 था ये। Everything clear sir? Everything clear? 5 नंबर का मैंने जगह नहीं थी इसलिए रब कर दिया। Discount allowed to Satish. सर्वेश तू तर हुशारच आहेस रे, पूर्ण समजलं तुला, हुशारच आहे बाळा। बेटा ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। ओके, नहीं तो चलो ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड बता देता हूं। सर ट्रायल बैलेंस इज ओपन मीन सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। व्हाट इज मीनिंग? ट्रायल बैलेंस इज ओपन मीन सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। सर ओवर सर, ऑल एंट्रीज ओवर सर। आसान लगा सबको? ओवर राइटिंग? अरे भरत चौधरी, बिल्स रिसीवेबल बुक जो था ना बेटा, बिल्स रिसीवेबल बुक का हमने पोस्टिंग किया नहीं। सो बिल्स रिसीवेबल बुक को कौन सा बैलेंस होता है बेटा? बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है। सो उसको डेबिट देना चाहिए। ओके, डेबिट देना चाहिए तो आपने कर दिया क्रेडिट। अभी क्रेडिट दिया तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट देना पड़ेगा।
और मुझे चाहिए डेबिट में, मतलब 2 बार डेबिट देना पड़ेगा, ये उसका मीनिंग है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन मत करने लगा यार, मेरा भी आवाज जाएगा, नहीं तो बार बार यही एक ही क्वेश्चन मत पूछो। 2 बार कैंसिल करना है, क्योंकि आपने क्रेडिट देके रखा था तो उसको अभी डेबिट देना है, और वापस एक बार डेबिट देना पड़ेगा, तब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस एंट्री होगा। और कितना डिटेल में बताएगा यार। हाँ, हाउ टू डिसाइड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड। बेटा नहीं बेटा, वी विल एज्यूम ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। नाउ इन दिस दे हैव नॉट गिवन trial balance is prepared or not prepared, but beta in exam we will assume trial balance is prepared. Okay, so in exam it is specifically mentioned किया होगा कि trial balance is not prepared, then only you have to rectify in the same way. If trial balance is not prepared, okay, trial balance is not prepared sir, तो क्या करेंगे? चलो अभी ध्यान दीजिए। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड होगा तो ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड, सो हाउ टू राइट द आंसर। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। नाउ फर्स्ट एंट्री, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री बेटा? रेक्टिफिकेशन एंट्री, परचेस टू सस्पेंस, करेक्ट है। सो सस्पेंस इज नॉट ओपन ना, सस्पेंस इज नॉट ओपन, so what you are going to do for first entry? Now how to write this? So here purchase account is debited. Which account is debited? Purchase account is debited. And in purchase के डेबिट में तुम क्या लिखोगे? टू अंडरकास्टिंग of purchase book. So suspense account is not open in that case by ₹100. Purchase account is debited, and what debit? Debit means what you are going to write? To undercasting of purchase book by ₹100. So this sentence you have to write in remark column. Second one, what is rectification entry? Sales return to suspense. So sales return account is debited. And what you are going to write? To undercasting of same, huh? Sales return book by ₹50. By ₹50. Sales return account is debited, and in explanation you will write remark column to undercasting of sales return book by ₹50. Third one. Now what is third one answer? Depreciation to suspense. So which account is debited? Depreciation account is debited. And what you are going to write? To omission, sorry spelling गलत हो गया, to omission of depreciation ₹250 in inverted comma. To omission of depreciation ₹250. Remark column is very easy. You can write it in own words also. Own words में भी डेबिट क्रेडिट लिख सकते हो. Now चौथा, मतलब सस्पेंस को लिखना नहीं है. Salary. Salary account is credited. What credited बेटा? Salary account is credited. By, now credit ना, क्या हुआ था उसमें? By double posting of salary ₹75. By double posting of salary ₹75. 5 नंबर, बिल्स रिसीवेबल था. Bills receivable is debited. Bills receivable is debited. 2, wrong posting or wrong posting in BR ₹1,500. नहीं, by ₹3,000. चलो 6 नंबर, Hari account is debited. Hari is debited to wrong posting ₹36. 7 number. Discount allowed debited. Discount allowed is debited.
to omission of discount allowed rupees 75. Sorry, rupees 25. 25 ना? हाँ. So if trial balance is not open, then suspense account. Okay. So this is how you have to write the answer. I will show you my original handwriting. You can take a screenshot. Yes, and you can write it in the break. Break में लिख लेना ये to wrong posting and wrong accounting. So you can see the answer. If no suspense, then you have to write in the same way. No suspense, then you have to write it in the same way. If no suspense, which one is easy? Without suspense or with suspense? Which is easy? Case 1 or case 2? Yes, you only tell. हाँ, स्टेटमेंट लिखना है. वेरी गुड अंशिका, स्टेटमेंट लिखना है. आयुषी बोथरा. Yes, beta Aisha. I am attending this session from Abu Dhabi. Very good, beta. But SRO student, sir, can I appear for exam in foreign center? Yes, you can, beta. Ayushi, thank you so much for your teaching easy way. Thank you, beta. केस 1 इजी था ना ज्यादा. केस 2 किसको लगा? ए रितु येड़ी है क्या रितु? बेटा नहीं ना, इजी कौन सा रहता है? केस 1 इजी रहता है ना बेटा. केस 2 कैसे इजी होगा? केस 1 में एंट्री होता है रितु. केस 2 में डायरेक्ट पोस्टिंग लिखना मुश्किल होता है ना बेटा. हिमांशु फ्रॉम जम्मू कश्मीर है. सुमन थैंक यू बेटा. हाँ, आफ्टर डूइंग केस 1, केस 2 इज इजी. हाँ, रितु का अभी आंसर है सर. आफ्टर सॉल्विंग केस 1, केस 2 इजी है. हाँ, तो पहले केस 1 आना चाहिए ना बेटा. चलो, सो स्क्रीनशॉट ले लिया. तो मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक में ये लिख लेना. अच्छा, इंडेक्स 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 टेक अ स्क्रीनशॉट रे इंडेक्स का. पहले इंडेक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन लिख के दिया है मैंने. चलो कंप्लीट करो फटाफट. टेक इंडेक्स का स्क्रीनशॉट एंड डू इट. प्लीज प्लीज फिल अप योर इंडेक्स. 5, 6, 7 ले लीजिए इसका भी. ओ माय गॉड, 5, 6, 7 ऑल आर इंपॉर्टेंट वन. एक ब्रेक, 2 मिनट में ब्रेक देता हूं. 10 मिनट्स का ब्रेक. टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, फटाफट फटाफट लीजिए. चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट. हाँ, ओवर. चलो लेट्स डू इट आफ्टर ब्रेक. बहुत मजेदार टॉपिक है, बिल्कुल भी ऑप्शन में मत छोड़ना. चलो टेक अ ब्रेक, 10 मिनट्स.
इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाइए. कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2. I want you to answer directly now. See, one thing, total of purchase day book, undercast. Undercast means this is error of commission. You can write there error of commission. Same error of commission. Now this is partial omission. This is partial omission. Third one, depreciation is partial omission, not fully omitted. This is again error of commission. Clerical error, 2 times recording Ross हुआ तो. So this is fourth one is error of commission. Bills receivable book, again error of commission. Error of commission. Last two also error of commission. Sorry, sixth one error of commission and partial omission. Seventh one is partial omission. Clerical error means totaling mistake, ledger posting mistake, take wrong amount in ledgers is called as beta error of commission. And what is omission? Omission is partial omission or complete omission. You forgot to enter it. It is called as omission. So clerical error समझ में आया? Okay. Now come to next question. Ilu 2. $500 paid for furniture purchase has been charged to ordinary purchase account. So what is the entry for furniture purchase? Chalo, draw format. Ilu 2, write down format. Ilu 2 का format लिखो. Correct entry, serial number. Correct entry, wrong entry, rectification entry. Draw the format. Serial number. Correct entry. Wrong entry. Rectification entry. Draw it properly. Purchases. Furniture purchases. What is correct entry, beta? I am giving you exactly. Acha, chalo. First one I will tell you. Furniture account debit to cash. $500. But you wrongly posted to purchase account. So purchase account debit to cash 500. Correct hai? Now what is same effect beta? Same to cash to cash. So cash is correct. What is not correct? Furniture and purchases. Correct entry uncommon, same side. Furniture account debit and purchases uncommon, we have to cancel. 500, 500. Now purchase, furniture is a real account. Furniture is a real account. Purchase is a nominal account. So this is called as error of principal.
एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स रॉन्ग अकाउंट यू ट्रीटेड. सो रियल अकाउंट को ट्रीट किया नॉमिनल अकाउंट. सो दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल. सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल. चलो, नाउ थिंक फॉर सेकंड वन. चलो, करेक्ट. यू हैव टू राइट इट इन कमेंट सेक्शन. CEWERE. सो CEWERE. चलो लिखियो जल्दी से. हु इज आंसरिंग वेरी फास्ट? चलो, सेकंड वन. वेरी गुड अंशिका. I don't want directly answer, beta. Aditya, I don't want direct answer. वेरी गुड. सबसे पहले अंशिका ने आंसर दिया. अंशिका, वेरी गुड. बेटा आर्यन, सब लिखना है बेटा. चलो अंशिका, वेरी गुड. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. एवरीवन करेक्ट. सर्वेश करेक्ट. सब लोग करेक्ट रहे. अरे वाह, सीख गए सब लोग रेक्टिफिकेशन. यस, वेरी गुड. रिपेयर्स टू कैश 50-50. देन बिल्डिंग टू कैश 50-50. Cash correct. Repairs is a nominal account. Building is a real account. So uncommon repairs same side. Building opposite side. Khatam. Repairs to building. Third one. Nominal. This is also error of principle. Error of principle. Nominal account treated as real account. An amount of rupees 100 withdrawn by proprietor for his personal use. Personal use means drawings. Personal account. Debited to trade expense account. So beta, I will tell you this answer. Drawings to cash. Drawings to cash. 100. But you debited. Trade expenses account debit to cash. 100. So beta, what is correct?
cash correct. So drawings to trade expense. Entry is drawings account debit to trade expense. 100. Error of principal. चलो चौथा तुम लोग बताओ. चलो फोर्थ वन. Rent debited to landlord account. Rent paid debited to landlord account. चलो चौथा तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में. वेटिंग फॉर योर आंसर फॉर फोर्थ. चलो फोर्थ वन बताओ फास्ट. नो बेटा. सस्पेंस टू बिल्डिंग रॉन्ग बेटा. पंजाबी. आसिफ जी रॉन्ग बेटा. ड्राइंग्स टू कैश था बेटा. साधना ड्राइंग्स टू कैश था. गलत किया आपने. चौथा करो. चलो फोर्थ वन. आई नो सब लोग थर्ड वन लिखना शुरू कर देंगे. सो फोर्थ वन मैंने पूछा आपको. यस. सबसे तेज है अंशिका. कहां से बेटा अंशिका तू. सीआरओ मीन्स कहां से हो. ये महक जो है बेटा. महक बेटा आप सिर्फ करेक्ट एंट्री लिखते हो. आपको रेक्टिफिकेशन तीनों लिखना है. CEWERE. वेरी गुड साधना. वेरी गुड. आयशा वेरी गुड बेटा. वेरी गुड मनीष. कार्तिक यू आंसर डायरेक्टली. रेक्टिफिकेशन आई डोंट वांट रेक्टिफिकेशन डायरेक्टली. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. वेरी गुड सर्वेश. रेंट टू कैश કેટલો છે. 100. लैंडलॉर्ड टू कैश 100. So Kish correct. Very good Ritu. रितु सीख गई अकाउंट्स बेटा तू तो. रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड. रेंट सेम साइड. लैंडलॉर्ड अपोजिट साइड. चलो फिफ्थ वन. चलो फिफ्थ वन करो खुद से. फिफ्थ वन करो खुद से. अंशिका फिफ्थ वन नहीं किया बेटा. यश ने करेक्ट किया. वेरी गुड बेटा अरुण. यस अंशिका ने फिफ्थ वन भी कर दिया करेक्ट. सैलरी बेटा दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ प्रिंसिपल. रेंट एंड लैंडलॉर्ड इज पर्सनल अकाउंट. सो एरर ऑफ प्रिंसिपल. सैलरी प्लेड टू क्लर्क debited to his personal account. Person P, salary N. So correct answer is salary to cash. And here clerk to cash. Clerk to cash. So cash correct છે. Salary to clerk.
सिक्स्थ वन बेटा, चलो सिक्स्थ वन, आयुषी पूरा आंसर दीजिए। रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी, wrongly recorded as Shaw and Company. बेटा इट इज कॉल्ड एज कॉम्पेंसेटिंग एरर। एक दूसरे का नाम कॉम्पेंसेट किया, दोनों पर्सनली है, दोनों पर्सनली है, सिर्फ कॉम्पेंसेटिंग एरर बोला जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी, यू रिकॉर्डेड एज शॉ एंड कंपनी। वेरी गुड। अंशिका आर्या, आधा ही आंसर दिया बेटा आपने। करेक्ट आंसर इज कैश टू शाह एंड कंपनी। Here you recorded as cash to Shaw and Company. Wrong answer बेटा रितु। पर थोड़ा सा क्या दिया है, रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी, कैश कम्स इन, कैश टू शाह एंड कंपनी, wrongly entered as कैश टू शॉ एंड कंपनी। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, कैश कैश करेक्ट है, 100 So rectification entry, Shaw and Company cancelled to Shah and Company. And last one. Now you only tell me type of error. Huh? Now you have to tell me type of error. I don't want answer. I want type of error. Type of error बताइए. Yes. Type of error बताइए 7th का. Paid for typewriter charged to office expense. So which is a type beta? Typewriter account debit to cash. 700. Office expense to cash. 700. Cash cash correct. To cash. So rectification, uncommon typewriter, same side, to office expense, uncommon, opposite side, 700, 700. Over. So which is the type beta? Type bolo. Which error? Very good. Archie answered error of principle. This is error of principle. Yes, it's a real account treated as nominal account. So it is beta principal error. Very good. Complete omission नहीं होता बेटा. This is error of principle. No, अंश wrong बेटा. No बेटा, compensating भी नहीं. Compensating means personal account कोई personal account treat किया. So only 6th one is compensating. Nominal account को real account treat किया, real account को personal account treat किया, तो ये error of principle है.
Yes, error of principle. Second illustration over. No suspense account in this. प्योरली एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर का क्वेश्चन था, सस्पेंस नहीं था. सस्पेंस कब आएगा? एरर ऑफ कमीशन एंड पार्शियल ओमिशन. सो पार्शियल ओमिशन में सस्पेंस आएगा एंड एरर ऑफ कमीशन में आएगा सस्पेंस. वन मोर क्वेश्चन बेटा, थर्ड वन ट्राई करेंगे आप भी. चलो वन मोर, टू क्वेश्चंस नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. एक थर्ड भी करेंगे और फोर्थ भी, एंड देन छुट्टी. आज की छुट्टी बेटा उसके बाद होगी. यस, एरर ऑफ प्रिंसिपल है यश. पांचवें में बेटा प्रिंसिपल एरर है, पांचवा भी एरर ऑफ प्रिंसिपल. चलो थर्ड वन बेटा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेट. I will tell you this answer. A purchase of goods from Ram wrongly entered in sales book. See बेटा, now 100 pages की नोटबुक में आ जाओ. 100 pages की नोटबुक. Yes, I am giving you one chart. Wrong entry in book and second one is account. All entry is wrong. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, 100 पेजेस के नोटबुक में लिखो. स्पेसिफिक अकाउंट इज रॉन्ग. एग्जाम्पल, परचेसेस ऑफ ₹100 wrongly entered in sales book, and here purchases, example, same example, purchases of ₹100 wrongly entered in sales account. Sales book, sales account. Okay, write down this is IMP या बेटा, रेड पेन से इंपॉर्टेंट लिख के रखना. Wrong entry in book and wrong entry in account. Whole entry is wrong. Specific account is wrong. Now beta, what is the entry of purchases? See the entry, correct entry, wrong entry, rectification entry. Purchases to X 100. X account debit 100 to sales 100. Beta, nothing is correct. Whole entry is wrong. Whole entry is wrong. So X to sales, nothing is common. Don't think XX common because X is credit in correct entry and wrong entry में debit है. So common is nothing. So बेटा purchases को 100 देंगे. Purchases same effect. X
100 credit for correct entry and cancellation of debit means 100. So 200. And sales we are going to cancel. So sales 100. So rectification entry में here no suspense. No suspense. Very, very important. Wrong entered in sales book means whole entry is wrong. एक बार हिंदी में परचेस ऑफ ₹100 रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक. बुक में एंट्री किया ना बेटा, पूरा एंट्री गलत होगा. परचेस की एंट्री क्या होती है? परचेसेस खर्चा है. सो परचेसेस एक्सपेंसेस डेबिट टू एक्स अकाउंट. टू एक्स अकाउंट. रॉन्ग एंट्री एक्स टू सेल्स. कुछ भी कॉमन नहीं है सर, कुछ भी कॉमन नहीं है. एक्स एक्स कॉमन नहीं है. एक में क्रेडिट है, एक में डेबिट है, तो कॉमन कुछ नहीं है. तो परचेस को डेबिट आएगा ₹100 जो करेक्ट एंट्री में है. एक्स को क्रेडिट ही आएगा, पर एक्स को 2 बार क्रेडिट आएगा. एक जो है ये 100 और बेटा एक कैंसलेशन का 100. तो एक्स को 2 बार क्रेडिट आएगा एंड सेल्स को कैंसल करेंगे ₹100 से. तो ये एंट्री होती है परचेसेस सेल्स टू एक्स. अभी यही एंट्री इधर क्या होती है सर? यही एंट्री इधर क्या होती है? करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री. सर परचेस अकाउंट डेबिट 100 टू एक्स अकाउंट 100. रॉन्ग एंट्री में 2x ये करेक्ट है. ओनली सेल्स अकाउंट इज स्पेसिफिक अकाउंट इज रॉन्ग. सो स्पेसिफिक अकाउंट मीन्स सिर्फ 2 सेल्स करेंगे. सो यहां पे x करेक्ट है, x करेक्ट. एंड सस्पेंस को डेबिट आएगा. सस्पेंस डेबिट 200. अनकॉमन परचेसेस करेक्ट एंट्री का अनकॉमन सेम इफेक्ट. टू सस्पेंस कैंसल्ड क्रेडिट एंड सेल्स कैंसल्ड डेबिट. सो सेल्स अकाउंट डेबिट 100, परचेस अकाउंट डेबिट 100, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 टू सस्पेंस अकाउंट. सी द डिफरेंस हियर. सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, not party account, not X account. Or here no suspense, X account is open. So book में एंट्री हुआ, whole entry is wrong. अकाउंट में एंट्री हुआ, स्पेसिफिक अकाउंट करेक्ट है, X करेक्ट है एंड सेल्स अकाउंट गलत होगा. So you can now write this very important concept. So what is the meaning? बुक में एंट्री हुआ, whole entry is wrong. Whole entry is wrong. You can write it now. Take a screenshot बेटा. बुक में एंट्री हुआ, whole entry is wrong. एंड अकाउंट में गलती हुआ तो एक्स करेक्ट होगा बट सेल्स अकाउंट गलत होगा. पार्टी करेक्ट है, पार्टी करेक्ट है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन. IMP. यस, इजी है. अरे इजी है क्या? Should I give you one more example? So बुक में गलती हुआ, बेटा अंशिका अकाउंट में गलती हुआ, परचेसेस ₹100 तो परचेस टू एक्स. अकाउंट में गलती हुआ तो बेटा एक्स को करेक्ट क्रेडिट किया, सिर्फ सेल्स अकाउंट में लिख दिया टू सेल्स अकाउंट एंड सस्पेंस को डेबिट दिया. मतलब एक्स करेक्ट है, पार्टी को डिफिकल्टी नहीं है, पार्टी करेक्ट है जब अकाउंट में गलती होता है. ओके चलो वन मोर अकाउंट. चलो वन मोर टाइम.
एग्जाम्पल 2 इसी में लिखना। दिस इज एग्जाम्पल 1 था ऊपर का, एग्जाम्पल 2 लिखिए। परचेस रिटर्न टू एक्स wrongly entered in sales return book, wrongly entered in sales return book। चलो, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन, टेल मी। रेक्टिफिकेशन एंट्री यू कैन डायरेक्टली टेल मी। चलो, रेक्टिफिकेशन एंट्री बताइए मुझे फास्ट इन कमेंट सेक्शन। एग्जाम्पल 2, परचेस रिटर्न टू एक्स wrongly entered in sales return book। बेटा, ये चैप्टर वही लोग अटेंड करते हैं जिनकी समझने की लेवल है। ये चैप्टर एरा गेरा जिसका अकाउंट्स परफेक्ट है वही ये हाथ लगा पाते हैं, नहीं तो नॉर्मल स्टूडेंट्स इसको हाथ नहीं लगाते। सबसे मुश्किल वाला चैप्टर है ये बच्चों के लिए, पर आपको बहुत ज्यादा क्लियर है, सब लिख के दिया है अच्छे से। परचेस रिटर्न टू एक्स wrongly entered in सेल्स रिटर्न अकाउंट। नहीं, बुक में गलती है, बुक में एरर है। बुक में एरर है तो पूरी एंट्री गलत होगी। परचेस रिटर्न, एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अपोजिट ऑफ, यस बेटा, रॉन्ग एंट्री, सेल्स रिटर्न इज 100 था, टू एक्स, होल एंट्री इज रॉन्ग, सस्पेंस नहीं आएगा। सो एक्स को डेबिट देंगे 100, एक लाइन छोड़ के टू परचेस रिटर्न 100, देन टू सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को कैंसल करेंगे 100 एंड एक्स को कैंसल करेंगे 100, मींस 2 बार एक्स को डेबिट देना है, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न टू परचेस रिटर्न। वेरी वेरी इजी एंट्री, एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, 200 100 100। वेरी गुड मनीष जैन, करेक्ट आंसर। सस्पेंस कैसे आएगा रे? आदित्य, प्लीज वॉच माय सेशन वंस अगेन। ये लास्ट के 15 मिनट्स वापस देखना, यू विल अंडरस्टैंड इट। एग्जाम्पल 2 ओवर। एग्जाम्पल 3, सेल्स ऑफ ₹100 wrongly entered in purchase account, wrongly entered in purchase account। Tell me directly rectification entry, 100 to X, sales of ₹100 to X wrongly entered in purchase account। Very good। आयुषी, वॉच 15 मिनट्स का लेक्चर अगेन, लास्ट 15 मिनट्स का लेक्चर वापस देखना बेटा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेल्स, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 100 100,
रॉन्गली एंटर्ड इन अकाउंट, अकाउंट है तो बेटा एक्स अकाउंट को डेबिट बराबर दिया, सिर्फ परचेस अकाउंट को डेबिट किया 100, टू सस्पेंस पार्टी को करेक्टली डेबिट किया था, एक्स एक्स करेक्ट, टू सेल्स 100, परचेस को कैंसिल करना है सो टू परचेस 100, एंड सस्पेंस को कैंसिल करना है तो डेबिट देंगे, सस्पेंस टू सेल्स टू परचेस, सस्पेंस टू सेल्स टू परचेस। प्रमोद रॉन्ग, आयशा रॉन्ग, सस्पेंस किधर गायब किया बेटा आयशा, अंशिका रॉन्ग, विकी रॉन्ग, भरत रॉन्ग, लिखो रे बेटा लिखो, नो बेटा आयुषी रॉन्ग, सस्पेंस आएगा ना बेटा, अकाउंट है, अकाउंट में गलती हुआ तो सस्पेंस भी आएगा। रितु तिवारी करेक्ट, अरे बाप रे रितु तिवारी करेक्ट, अंशिका रॉन्ग बट रितु तिवारी करेक्ट, जो सबसे होशियार लड़की है वो रॉन्ग हो गई, और रितु तिवारी बेटा साइंस बैकग्राउंड के ओके भी उसने करेक्ट किया, यस बेटा दी, सी दी बेटा ब्यूटी ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंट्स। यस, क्यों आयशा तेरा अंशिका गलत क्यों हुआ? अकाउंट गलती, होल एंट्री गलत, सॉरी सस्पेंस अकाउंट, होल एंट्री गलत, बुक में गलती हुआ तो ठीक है। आई विल डू वन थिंग टुडे, आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया रेक्टिफिकेशन, डू वन थिंग, सॉल्व 3 to all questions बेटा, सी सपोज इफ एरर इज डन इन द नेक्स्ट ईयर, तो इंस्टेड ऑफ नॉमिनल अकाउंट ओपन पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, solve 3 4 5 6 7 questions in next session. I'm not going to ask you any question, huh, beta. You already solve all these questions 3 4 5 6 7, mark important questions beta, your queries you can mark down, because in institute material it's not given in the format of correct entry, wrong entry, rectification entry. तो आप लोग खुद सोचिए, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट सेशन में। यस, गिव प्रॉपर टाइम 2 to 3 hours, हाँ बेटा 3 घंटे दीजिए रेक्टिफिकेशन को, ट्राई टू फाइंड आउट ऑल एंट्रीज, इफ एनी क्वेश्चन यू आर नॉट गेटिंग इट यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन, तो मैं नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से करवा लूंगा, बट सेल्फ सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो नेक्स्ट सेशन में सेल्फ सॉल्विंग करना बहुत जरूरी है, तो हम लोग मिलते हैं ट्यूसडे को, लास्ट सेशन इन दिस मंथ, उसके बाद मैं वापस आऊंगा नेक्स्ट महीने में नए साल में, ओके। चलिए, सो कंप्लीट इट, थैंक यू, थैंक यू। हो हो।